Yes, sir. Amreen madam है from ना? Patna. Yes. वो भी है। और उसके बाद तो उनका भी पार्टिसिपेशन ध्यान में रख के मराठी को अवॉइड करें एंड इंग्लिश, क्योंकि हिंदी तो सभी लोग समझते हैं हमारे यहाँ, और अपनी हिंदी तो महाराष्ट्रियन हिंदी होने के कारण महाराष्ट्र सभी समझते हैं, और अंग्रेजी भी सभी लोग समझ सकते हैं, कम से कम मेरी तो समझ सकेंगे। तो इसलिए भाषा हम मराठी को छोड़ेंगे आज, हिंदी और अंग्रेजी में बात करेंगे। तो इसमें जो आपने लिस्ट भेजी थी उसमें काफी सारे लोग शायद नए से ज्वाइन हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर करके। मुझे जो प्रोफाइल दिखा उसमें मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इसका मतलब ये सारे लोग 5 साल या उससे कम इस प्रोफेशन में है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बायोडाटा मैडम ने आपको जो बताया ना, ये बायोडाटा बताने के एक जो मकसद है वो ये कि आप में से सभी लोग अपना इस बायोडाटा इस कम से कम ऐसा बना सकते हैं, इससे बेहतर भी बना सकते हैं। अभी जो मैडम ने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी अलग अलग पोस्ट पे काम करने का जो मुझे मौका मिला, वो सभी टीचर को मिल सकता है, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आज जो टॉपिक वैसे मिला है कि स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसका सिग्निफिकेंस जो है वो इसलिए है कि जो एक हमारी जो इकोसिस्टम होती है, जिस इकोसिस्टम के अंदर हम लोग हमारा करियर को हम प्रोग्रेस करना चाहेंगे, तो वो इकोसिस्टम को डिटरमाइन करती है, इसलिए वो टॉपिक है। और मैं इसके बारे में टेक्निकल बातें ना करते हुए थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, और ये भी मकसद ये रहेगा कि सिस्टम के अंदर हम हमारा करियर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और परसू कर सकते हैं, वो मकसद रहेगा। तो सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट जो टीचर है उन सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके लाइफ में टीचर बनने का निर्णय लिया। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लोग जो है टीचर जो बने हैं, दे आर नॉट अ टीचर बाय डिफॉल्ट बट दे आर टीचर बाय डिजाइन, in the sense you wanted to be a teacher and therefore you are, not that you nothing else could be done and therefore we are teachers, ऐसा नहीं होना चाहिए। For example, that was my experience in the life. I wanted to be a teacher from my childhood, and with the grace of the God I got opportunity to become a teacher, and I never had any regret for becoming a teacher, although I was fully qualified, because in the time when I did my post graduation in law, there were very few people जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे लॉ में। ग्रेजुएशन करके लोग अपने अपने काम में लग जाते, बट देन आई परसूड पोस्ट ग्रेजुएशन, so there were very few people, and therefore we had a lot of opportunities. I had opportunities in the corporate world also, but I deliberately chose to join teaching profession. I like the teaching profession and I enjoyed the teaching profession. और आप लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो एक तजुर्बा, एक अनुभव एक टीचर करके हमको मिलता है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए किसी बैंकर के साथ में, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ में, या फिर इसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी आप कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो और एक टीचर करके जो आपका एक्सपीरियंस है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे, और ये काफ़ी रिलीवेंट है हमारी लाइफ में, इन द सेंस कि हमारे जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें हमारा एनकाउंटर जो होता है
जिनसे हमारा संबंध आता है, जिनको हम सर्विस देते हैं, वो हमेशा यंगस्टर्स आते हैं। हायर एजुकेशन में है हम लोग, तो हमारा जिनके साथ में संबंध आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चे होते हैं। तो वी आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विथ यंगस्टर्स टिल द लास्ट डे ऑफ अवर लाइफ। तो वो जो होता है कि नई नई बैचेस आती है, उनके साथ में नया आइडियाज आता है, नई एनर्जी होती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे को भी अफेक्ट करती है, और हमको भी वो हमेशा एक एनर्जेटिक बना के रखता है, enthusiastic बना के रखता है, इनोवेटिव बनाता है। तो ये जो चीज को मिलता है उसके बाद में, उसका जो फायदा वो शायद किसी और को नहीं मिलता। एक बैंकर को तो सारे तरह के लोगों के साथ में थ्रू आउट द लाइफ, यंगस्टर भी आते हैं, एजेड भी आते हैं, सब आते हैं, मिक्स पॉपुलेशन का उनके साथ में इंटरेक्शन होता है। तो इस बात को हमको, उसका गौरव हमें महसूस होना चाहिए कि हम हमेशा यंगस्टर्स के साथ में रहते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपको आपके लाइफ में अगर किसी एक स्टूडेंट का भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिला तो भी हमारा लाइफ सार्थक हो जाता है। हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट? हमारा मकसद एक टीचर करके सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान देना नहीं है, हमें उसके आगे जाना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफर करना है। हमारा जो उद्देश्य है एज ए टीचर करके, और हमारी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हायर एजुकेशन के जो मूलतः जो पर्पजेस है, उद्देश्य है, उसी से हमारा जुड़ा हुआ है। तो वी आर एजेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन। और एज ए टीचर अभी जिस लेवल पे आप लोग है, असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर एट द लेवल ऑफ डिलीवरी पॉइंट्स। आप जो भी हायर लेवल पे पॉलिसी डिटरमाइंड होती है या प्रोग्राम डिसाइड होते हैं, आप उस प्रोग्राम को डिजाइन नहीं करते, आप उसको डिलीवर करते हैं। आपका काम है आपके कॉलेजेस में, आपके क्लास में जो बच्चे आएंगे, उन बच्चों को किसी और ने जो डिजाइन किया है प्रोग्राम, उसको आपको डिलीवर करना है। यू हैव नॉट डिजाइन दैट प्रोग्राम, अभी आपको वो ऑटोनॉमी नहीं मिली है। तो आपका जो रोल है एज ए असिस्टेंट टीचर, स्पीकिंग जनरली, our role is to deliver what has been designed by somebody। और स्टूडेंट्स को भी अभी का जो हमारा जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर स्टूडेंट्स को भी चॉइस नहीं है। somebody has decided for him what he must learn in a particular program, तो उसको ऑटोनॉमी नहीं होती है। तो एक हमारा एक पिरामिड स्ट्रक्चर है फिलहाल, उस पिरामिड स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली उसको ऑटोनॉमी मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आता है, तो उस बच्चे को चॉइस नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको वो प्रिस्क्राइब किए हुए सब्जेक्ट पढ़ना है, और हमको भी वो प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। लेकिन जैसे बच्चे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, देन ही कैन डिसाइड कि व्हाट स्पेशलाइजेशन। ही हैज अ चॉइस। जैसे कि मेरे फैकल्टी में, मेरे डिसिप्लिन में होता था कि इतने सारे सब्जेक्ट, हम 30-32 सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों को पढ़ाते। पोस्ट ग्रेजुएशन में जब वो आता है तो हम 7 स्पेशलाइजेशन में से एक स्पेशलाइजेशन उसको ऑफर करने के लिए बोलते। सो स्टूडेंट एक्वायर्ड द चॉइस एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पर उसमें भी एक उतना लिमिटेड चॉइस है। उसके बाद में उसका जो कंटेंट है, वो कंटेंट फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए जो प्रिस्क्राइब किया गया वही रहता है। बट एज ही प्रोग्रेसेस फर्दर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ ही वांट्स टू परसू पीएचडी, तो यहाँ उसको सही मायने में ऑटोनॉमी मिलती है। तो दैट स्टूडेंट इज एबल टू डिसाइड द सब्जेक्ट। कानून के तौर पे तो हम ये बोल सकते हैं कि ही और शी हैज a choice in what area, on what subject the student wants to do his PhD। तो हम ग्रेजुअली देखते हैं कि बॉटम से लेके टॉप तक जब बच्चा जाता है, प्रोग्रेशन होता है, तब उसको हमारी सिस्टम में, आज की सिस्टम में उसको चॉइस मिलती है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है। अभी जो पैटर्न आ रहा है नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेके ही बच्चे को
चॉइस मिलने वाली है, इसको हम जैसे बोलते हैं कि चॉइस बेस्ड एजुकेशन. The student will have the choice to decide what subjects he wants to study. Of course, that is again a limited choice, but at least some choice is being given to the student at the undergraduate level. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आने वाला है, और उसको हमको सबको स्वीकारना है बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. आज हम जिस यूनिवर्सिटी लॉ की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको एक कैफियट ही रखना चाहता हूँ कि दिस लॉ इज नॉट डिजाइन्ड टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इट्स ट्रू सेंस. इसमें जो इसका जो कानून का जो डिजाइन है फिलहाल का, बिकॉज अवर सब्जेक्ट सराउंड्स द प्रोविजंस ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट. तो दिस महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2016 में ये कानून बना था, उस समय ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी अस्तित्व में. तो वी वर गवर्न बाय द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986. तो इसकी जो प्रोविजंस है, इसका जो ढांचा है इस कानून का, वो उस एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार था. तो अभी हमें इस कानून में भी बदल आने वाले हैं. तो हम जो आज जिसके बारे जिस यूनिवर्सिटी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो मैं बताना चाहूंगा कि वो इट इज नॉट फुल्ली सूटेड टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, जिसके बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने जिस सिस्टम को ज्वाइन किया है, दैट सिस्टम इज regulated by law. अभी you are now surrounded by the wave of rules and regulations. As a teacher in affiliated college or in university, you are subject to the wave of rules and regulations. और ये जो rules and regulations है, it defines both your rights as well as your responsibility, your obligation as a teacher. अभी तो 7 पे कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसके लिए जो हमने रूल्स बनाए, उसके अनुसार एक टीचर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू किया है. तो नाउ द ड्यूटीज हैव बीन कोडिफाइड. तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अभी कोडिफाई हुए है, रूल्स में आ गई है वो बातें. एंड इफ यू हैव रीड इट, तो आपने शायद उसको महसूस किया होगा कि जिसको हम अभी तक हम इथिकल और मोरल ऑब्लिगेशन समझते थे, अभी वो लीगल ऑब्लिगेशन हो चुके हैं. तो अप टू नाउ दे वर ओनली लीगल, not the strictly speaking legal obligation, but ethical and moral obligation. That is aspirational obligation. But now they have become legal obligation. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है. टीचर की जो जिम्मेदारी है, आई ऑलवेज मेंटेन की वंस ए टीचर ऑलवेज टीचर. एक टीचर को 24/7 टीचर ही रहना पड़ता, क्योंकि यू आर अंडर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटिनी ऑफ योर स्टूडेंट. आप उस चीज को महसूस करें या ना करें, बट यू आर कॉन्स्टेंटली, इफ यू आर ए टीचर, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय योर स्टूडेंट. So there is a huge responsibility. All the teachers carry that on their shoulder, that responsibility of expectation, burden of expectation. So there are expectations from the students, expectations from their parents, expectations from the society, expectations from our management, and expectations from the whole nation also. So a teacher carries that burden of expectation. And to discharge that burden, you have to be constantly conscious about your status as a teacher. Now see, you have acquired the status, a legal status of being a teacher. Now some of these obligations, they come from the laws, rules and regulations, and some come from our professional ethics. So how do we address? That's very important.
इसके बारे में मैं जब प्रिंसिपल करके मेरे कॉलेज में था तो मैं अक्सर मेरे टीचर्स को ये बात कहता था, our dress should be simple. So whatever we wear, that dress should be very simple. But our address should be provocative. So our address, what you talk to the student, what you tell to the student, it must provoke certain, it must agitate the mind of the student. He must be instigated to think, question, and reflect. So that address has to be, in that sense, very provocative. And dress, very simple. The more simple, more better it is. Unfortunately, so what I have seen is that we are believe that the teaching is not a way of the luxury of the life. Teacher's job is not to enjoy the luxury of the life. It is something different, where it is a service, a pious service, service to the society, service to the knowledge. So that obligation has to be constantly kept in mind. Unfortunately, this is being neglected, at least I can say, if not forgotten. This is being neglected, and so that raises question in the mind of the society about the present day role of the teacher. Because some we hear certain comments from the society. The teachers are being paid highly, but they don't deserve it. So that pains us. This kind of the comment will come from the society. That is quite painful. So we have to be conscious about this, and we should not be responsible for inviting this kind of the. So, and last general point which I want to share with you, my experience is that when I was a student some 40 years back or 50 years back, my source of information was limited, either a lecture in the college, lecture in the class, or a book in the library. And our situation was, if we bunk the class or if we miss the class, and if we visit the library and ask for a particular book, invariably the answer we wish to get is, so that book is has been issued, it is not available. So to get information, wait for days together. So because there was no credible, reliable alternative source of information. But that is not the case today. Your students don't depend on you for your information. Students have the information available 24/7. They are not as handicapped as we were when we were students. So today's students are fortunate thanks to the technology, communication technology. 24/7, from anywhere, anytime, any student can access the information, desired information on any subject. So when it is so easily available, accessible, why will students come to your class? I am making one very important observation based upon one phenomenon which is to be found. If the classrooms are empty, there are no students in the classes, especially in humanities. This is the problem we have seen. So I never believed in enforcing attendance of the students by invoking rules, because we have rules. 75, if the students don't attend classes, 75% of the classes, he or she should not be allowed to appear in the examination. But that is something forcing the students. So a teacher's responsibility is not to force the student, but to attract the students in that. So that is a big challenge for today's teacher and teacher of your generation. Because if the information is available even out of the classroom, why the student should come to your class? So here is the expectation of the student to get something beyond what is there in the book. So no student will be coming to your class for information. He would come to your class if you are giving him wisdom. So there is a huge difference between information and wisdom. Every student will be attracted if he finds that the teacher is very good
competent, capable, enthusiastic, and passionate to share the knowledge. So here comes our experience, and here it requires साधना, a deep साधना, sincere साधना. इसलिए मुझे लगता है कि टीचर का रोल जो है डिफिकल्ट हो रहा है. हमें एक साधक बनना पड़ेगा. हमारा जॉब एक साधन नहीं है टू गेट लग्जरीज ऑफ द लाइफ. तो ये जो हमको काम करना है, एक्सपेक्टेशन, वी हैव टू डिस्चार्ज दैट बर्डन ऑफ द एक्सपेक्टेशन. ये बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन हमको एक इकोसिस्टम के अंदर डिलीवर करना है. एंड व्हाट इज दैट इकोसिस्टम? दिस इकोसिस्टम इज बिल्ट अप बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द एक्ट एंड अंडर द एक्ट. तो मैडम ने जैसे टाइटल दिया था स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस. Statutes and ordinances are the subordinate rules. The primary rules of our higher education in the public university, that is determined by the university's legislation. And presently, for the 13 non-agriculture, non-medical, and non-technical public universities in the state of Maharashtra, we have a common law, that is Maharashtra Public University Act. So this act was, and what was the law prior to this 2016 legislation? It's not that there was no law, but rather the law was Maharashtra Universities Act of 1994. So title has changed. Now it is Maharashtra Public Universities Act. Earlier it was only Maharashtra Universities Act. There must be some reason why this name has changed, why this title has changed, and why the new law was enacted, repealing the earlier law. So now the 1994 law is no more there. It has been repealed. उसके नया कानून जिसका नाम महाराष्ट्र पब्लिक. So there are three reasons why this new law came. As I said, the 1994 legislation was based upon the education policy of 1986. Number one. Number two, 1994 legislation. Two important changes occurred. One, emergence of information technology, communication technology, invading the sphere of higher education. Secondly was the global phenomenon, world phenomenon of establishment of World Trade Organization, which is agreement, general agreement on trading services, under which the service sector, including the higher education sector, was open for global competition. So to address these challenges arising out of these changes which occurred in the society, it was felt necessary and of course the emergence of large number of the private universities. So after 1994, the government started withdrawing its foot from this sector. No new colleges were established by the government. So rather private sector was encouraged to establish the colleges. इसलिए आप देखेंगे कि 94 के बाद में most of the colleges which have come in existence, they are in the private sector. चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो या वो लॉ का हो या जनरल हो, साइंस के हो. So government did not establish new colleges. Private sectors established the colleges. Not only colleges, but even the university. So private sector was encouraged to participate, to invest in higher education. So emergence of the private university, emergence of the deemed university. So these phenomena necessitate change in the law, and the thrust of the law is therefore the public university. So when we talk about Maharashtra Public University Act, it means this law does not govern the private university. उनके लिए अलग legislation है. तो ये जो 13 universities है, including Nagpur University, Amravati University, Gondwana University, Mumbai, Pune, these are the 13 public universities. In the sense, these universities are funded by the state, right? Funded by the state. The salary grant is given by the state government. So this law applies to these public universities. और इस public university का जो structure है, so it consists of its own department as well as its conducted colleges, but largely the private
affiliated colleges, right? So most of you may be working in the affiliated colleges, which are established by the private sector. और ये affiliated colleges में भी फिर दो तरह के colleges होते हैं, जैसे कि no grant colleges and grant in aid colleges. Some of the colleges are receiving grant from the state government, but as I said, later on the government had stopped giving the grant, and all these colleges were expected to generate the fund, pay the salary to the teachers from their own funds, from their own revenue. और यही कारण है कि जिसके कारण बहुत सारे टीचर्स की समस्या हम देख रहे हैं. I have come across many cases where the teachers of the private colleges, they are not getting salary as the teachers of the grant in aid colleges or the teachers of the universities are concerned. As far as the teachers of the grant in aid colleges or the universities are concerned, they are ensured prompt payment of their salary. There is a revision of the salary as per the recommendation of the various pay commissions. They are getting DAs and everything. So service conditions of the teachers working in universities or in the private colleges which are aided by the government are much better, far better than the service conditions of many of the private colleges. Because the revenue of the colleges is based upon the fees which they charge and the number of the students which they get. So totally it is controlled by the market conditions. There was a time when the engineering colleges had better days. They had a boom. Management colleges also had a better day. But presently, all these types of the colleges are facing problems. And with them, the teachers working in these colleges also are facing the problem. There is a problem of non-payment of the salary. Many of the colleges and many of the teachers, they have suffered. So I know some of the cases which are pending, and the teachers who have been denied salary. So this is the major difference between these two kinds of the colleges. I don't know to which kind of the colleges you belong. If you belong to private unaided colleges, then the conditions are little different from the conditions of the teachers working in the aided college. Notwithstanding that, law is same. Law is same. All these private colleges, they were given permission to establish colleges on the condition that they will comply with all the rules and regulations which are framed by the university. So you have a plethora of laws either under the university primary legislation, that is University Act, as well as the subordinate legislation, that is various statutes and ordinances which are framed by the university. Now, leaving that point, let us come to the structure of the university, which will give you an idea how to shape, how to plan your career. So this, as I said, our universities are corporate entities. They are organic entities. Organic entities in the sense there are different organs of the university. There are different officers of the university, and there are different authorities, bodies, and committees of the university. Now, why this is important? Because we participate into the affairs of the university by becoming members of these bodies or the authorities. So first, let us take a stock of who are the important officers, because you can dream to become one day those officers. Of course, at the top is the Vice Chancellor of the university, as everybody knows, who is appointed for a period of 5 years. So it's a tenure post, and any person who is qualified to become professor or principal of the college with having some prescribed experience and all that, he or she can aspire to become the Vice Chancellor of the university. And as a Vice Chancellor, he is the academic and administrative head of the university. Imagine his empire. More the bigger the university, more big is the empire. For example, Mumbai University. The Vice Chancellor of the Mumbai University is sitting over his empire. He has got about 600 to 700 colleges which are affiliated to it.
with a budget of about 600 to 700 crores and lakhs of the students. So that is the power as well as the responsibility of the vice chancellor. That is one experiment, and at the lowest end, you have got a university like Solapur University, Ahilyabai Holkar University, whose jurisdiction is confined to only one district. So a small university with maybe around 100 colleges and few thousands of the students. So there is a range of the university. All the 13 universities are not same, are not equal. Their jurisdiction, their powers, their finances, financial resources, they are different. The biggest being the Mumbai University. In between, you have got university like Nagpur University, which has a jurisdiction in 4 districts with around 4 to 5 lakh students and with a budget of about 300 to 400 crores. So that gives you an idea as to, you can become a vice chancellor of this university. So it can give an immense satisfaction with so much of the resources, hundreds of the employees in it at the disposal. What wonder you can do with so much of the resources? So that is the topmost post in the university, then followed by the pro vice chancellor. He is a shadow vice chancellor, having his own power. So earlier there was no such institution of the pro vice chancellor. Of course, it started somewhere around 90s with the growth of the university. Now, of course, all the universities have got the post of the pro vice chancellor. So that is a second post which you can think about. And mostly the role of this pro vice chancellor is academic one. He is to look after the examinations, research, affiliations, and all that. And third person who is important figure in the university administration is the registrar of the university. Again, a teacher can become the registrar of the university. All these 3 posts are reserved for university professors. Or university professor means a person who is eligible to become a professor. Then you have got finance officer. Of course, now finance, this post could be occupied by even a teacher earlier, but now the qualifications have been changed. You can't think of becoming a finance officer of the university. The 4th post which you can think about is director, board of examinations and evaluation, जिसको पहले controller of examination बोलते थे. So conducting the examinations, including research activities in the university, that is the important function of this person. And now there are large number of the newly created posts, director of sub-campuses, director of various boards, so newly created. And most important change which has occurred by the Act of 2016 is the full-time dean of the university. So this is the important change which has been introduced. Prior to this, under the 94 Act, the deans were elected ones. They were elected by the teachers of their faculty, and they were not full-time employees of the university. So they used to work on the part-time basis. After discharging their responsibilities in their respective colleges, they used to attend the work associated with the post of the dean. So it was something like a ad hoc arrangement, not a full-time professional service which they used to give. And there was then element of election. Now what has been most important change which has been introduced by this act is, earlier see, the universities had the autonomy to decide the faculties also. How many faculties, what kind of the faculties university wanted. So it was the decision of the academic council of the university. And therefore, different universities had different faculties. The maximum number of the faculties were in the Bombay University and followed by Pune and then Nagpur University. So we had around 7 to 9 different faculties.
the faculty of education, faculty of law, faculty of medicine, faculty of engineering, faculty of science. So these are all different faculties, and each faculty had its own dean. Mind well now, what has been done by this act? The uh, preamble or the object of the act is supposed to be to grant autonomy to the university. And it says this act has been enacted to confer better autonomy to the university. So with this promise, when I read this act, what I find is that in fact it takes away the autonomy of the university. So there is a difference between what has been promised and what has been, in fact, what has been done. So the autonomy of the universities to decide the number of the faculties has been taken away because now this act prescribes uniformly for all the 13 universities to have 4 faculties. Is clubbing of the faculties, science and technology, commerce and management, humanities, and interdisciplinary. So these are only the 4 faculties now. No more autonomy to the universities to decide their faculty. But then this act gave the autonomy to the universities to decide what shall be the content of their faculty, what subject will be included in the faculty. Of course, certain faculties did not pose any problem. Science and technology obviously should include those disciplines of science and technology, means engineering, then various kinds of the science subjects. But here also including, of course, pharmaceutical sciences. But see, where the law ends, the politics begins. So what I observed in our own university was the former faculty of pharmaceutical sciences was included in the faculty of interdisciplinary studies. Now, by what logic one can include pharmaceutical sciences in interdisciplinary studies? No one knows. When you had a science and technology, logically it should have gone there. Now, some such a kinds of the funny things had happened in certain universities, and therefore the government intervened and government prescribed what shall be the content of your faculty. And pharmaceutical sciences then was included in science and technology. The point is, both this law prescribes uniformly 4 faculties only, and the content of these 4 faculties has also been prescribed by as per the recommendation of the Vice Chancellor Mai Committee report. Now, this is one important change. Along with this, this act has also brought about an important change of a full-time dean of the faculty. Now, the dean is not an elected, but rather a selected one, appointed one. So, dean of the faculty is appointed by a selection committee headed by the vice chancellor. So, instead of election, now it is appointed. Secondly, it is a full-time post. So, that person is in the payroll of the university. He becomes a person who is appointed as a dean, is the employee of the university, full-time employee of the university for a period of 5 years. And he has been given lot of responsibilities with respect to his faculty. So this is one key post which you can aspire to acquire later in your career. You should aim for it, you have to target for it, you have to prepare for it. So the qualifications which are prescribed for the post of dean are the qualifications of a professor or the principal of a college. So you should learn what then are the qualifications prescribed for the post of the professor by the University Grants Commission, because these qualifications are prescribed by UGC. And so this is very important post, because you become almost a academic head of your entire faculty. So as a dean,
all the colleges come under the jurisdiction of the dean with respect to the subjects which are included in his faculty. Now, these faculties have also become big, as I said, humanities, for example. One of the very big faculty now, the former faculty of law, the former faculty of art, former faculty of fine art, former faculty of social sciences, literature, all these faculties now have been clubbed under one umbrella faculty of the humanities. So this gives a very big jurisdiction, wide jurisdiction to the dean of the faculty. But of course, power doesn't come in isolation. Power is coupled with the responsibility also. So it's one of the very busy guy in the university. Dean is supposed to be very busy guy in the university. Along with this creation of the new post of the dean, a new body also has been created by this act. And that body is the Board of Deans. It was not there earlier under the Act of 1994. We didn't have Board of Deans. Now we have this Board of Deans consisting of all the deans of the faculty and associate deans where they are appointed, because the provision is there for appointment of associate deans also. But the universities generally won't appoint because the burden to pay salary is from the university. So at least 4 deans are there, and it is headed by the Pro Vice Chancellor. So Pro Vice Chancellor is the chairman of this Board of the Dean. So as an academician, as a teacher, you must be well aware about this Board of the Dean and its function. Very important function is performed. All the academic functions of the university are, I can say without any exaggeration, are controlled by the Board of Deans. So therefore, the kind of the persons who are going to become the deans of the faculty, they are going to decide the direction, दिशा और दशा दोनों को डिसाइड करेगा डीन ऑफ द फैकल्टी. और ये जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डीन जो होता है वो किसी एक फैकल्टी से आता है, उसको बाकी की जो फैकल्टी उसमें इंक्लूड किए हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होता. So he has to accept that challenge. Those the niceties or the challenges, requirement, expectations of those faculties with which he is not familiar, because he has to provide that leadership. Dean is an academic leader of his faculty, so he has to undertake various programs, encourage the teachers, motivate the teachers, improve their performances, their output, and improve the quality and standard of teaching, learning, and research in his respective faculty. And he therefore has this, apart from having the paper qualification of a professor, he must have the leadership quality also, academic leadership. He has to motivate. The teachers would expect from the dean to provide the guidance. So in my estimate, dean is more important figure in the university than the vice chancellor, because vice chancellor is not directly responsible for that academic activities, although he is a academic head. So deans are the persons who are very important. They have the power and they have the responsibility. So you can plan to become a dean of the university. That will give you immense satisfaction, although that post is for 5 years only. But then, having worked as, having served as, having gained the experience of working as a dean of the faculty, the next step forward will be to become the pro vice chancellor or to become the vice chancellor of the university. So that will give you the complete control over the affairs of the university. You will come in grip with the niceties of the academic administration, and therefore, instead of directly planning to become vice chancellor, if we first plan to become the dean and then vice chancellor,
that would give you, I think, an age and chance of succeeding as a vice chancellor. Apart from these key posts, that is vice chancellor, pro vice chancellor, registrar, and deans of the faculty, there are other posts also. The director of board of innovation and incubation. These are new kinds of the boards which have been created. Innovation, incubation, international linkages, national and international linkages. These were not the bodies earlier. Now, as I said, with the emergence of information technology and the necessity to incorporate it into university administration management, now we have a separate board of information technology, and headed by a director. So these are different other posts also, which you can think of for planning your career. Apart from these officers of the university functions on the basis of the various authorities and the body. Say the university functioning is a democratic one. The structure is body-based, authority-based. And the most important authorities of the university are Management Council, Senate, Academic Council, Board of Studies, and other boards which I mentioned, Board of Sub-Campuses, Board of Research, and all that. But these are the four most important authorities and bodies of the university. And in each of these bodies and authorities, you find the representation to the teacher. To start with, there is a board of study for each subject or subjects. In the same faculty, you will have multiple board of the studies. Of course, its function is to design the programs, new programs, to revise the programs, update the programs. Now, the structure of this board of studies is, it consists of the teachers, right? Chairman, and then other members. So, two ways these board of studies constituted. One is ex officio, somebody becomes that if the university has a department, postgraduate department for that subject, the head of that department ex officio becomes the member of the board of the studies. He is fortunate. He or she, whoever is the head of the department, without any election or nomination, ex officio becomes the member. But apart from this, there are other persons who can become the member, that is, through election and through nomination. Some persons who are heads of the department in the colleges, they can participate in election, and some 6 teachers are nominated by the vice chancellor. Entirely, this body consists of the teachers only, senior and junior teachers. And this is one body where you can plan to become. First, you should become a member of Board of Studies. Acquire the experience there, how the university administration takes place, how the programs are designed. And this, as a teacher, simple teacher, your role is to deliver what has been designed, right? Designed by the Board of the Studies of the university. All the programs are to be passed by the Board of the Studies. And as a simple teacher in the college, your job is to teach to the students what has been prescribed in the program, what has been there in the particular course, which you have not authored. So whatever may be your views about that particular program, they carry no meaning unless you are a member of the Board of Studies. If you become a member of the Board of the Studies, it gives you an opportunity to design the program according to the needs of the time. So this could be the beginning of your career into the university. Of course, now presently throughout the state of the Maharashtra, all the universities, the process of constitution of these bodies is going on. They have got a tenure of 5 years, and 31st of August 2022,
the tenure of the earlier bodies was over. नाउ अभी नए से बॉडी बन रही है, बोर्ड ऑफ स्टडीज बन रहे हैं. उसके बाद में नेक्स्ट इज द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी. So as the name suggests, this body, this authority is there to deal with academic affairs. So it deals with sanctioning of the programs suggested by the board of the studies. Then some of the members of the academic council goes to the management council, and the most important function is, of course, passing of this transacting the academic affairs of the university. The third body is the Senate, which consists of representatives from various stakeholders, including the graduate students, then including the teachers, then principals, management of the colleges. From government, there are nominations of members of the Jilla Parishad, Nagar Parishad, and all that. So representatives of various stakeholders, they are there in the Senate. So it is that authority which is representative of the expectations of the society. But as its name is there, the most important function of this Senate is to regulate the non-academic affairs of the university. And it is the Senate which controls the purse of the university. The power to pass the budget is vested in the Senate. And there are other functions interested, but mostly they are non-academic in nature. But it's not that it cannot discuss the proposal for starting new programs in the university. Maybe the proposal can come, but that proposal will have to be sent to the academic council for finally accepting it. Then the most important authority of the university, and which we invested with lot of powers to control the affairs of the university, is the management council of the university. जैसे कि उसका नाम ही है मैनेजमेंट काउंसिल, उसका फंक्शन है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. और सारे पावर्स, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, all these are within the jurisdiction of the management council. So the management council consists of representatives of the teachers, representatives of the principals, representatives of the students, and so on, and certain nominees. And this management council is headed by Vice Chancellor as chairman. So this is the ultimate body which you can aspire, the democratic body of the university. So if you can become a member of the management council, maybe you can do a lot of work for others in the university. Now, I will finish my presentation within 5 minutes or 5 to 10 minutes, then we will be open for right. Audience, if you have any question on this presentation so far, I think we can interact before I go ahead and speak on the remaining part of the presentation. Anybody having any question about this? आपका थोड़ा सा राहुल नगराय. हेलो. हाँ हाँ सर, बोला ना. एक ऐसा क्वेश्चन था कि सपोज अगर सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट है. हेलो. सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट में सर्विस बुक जो रहती है वो मेंटेन करना ग्रांटिएट की तरह कंपलसरी है क्या सर? See, as a teacher,
as a teacher, right? Whether you are working in grant-in-aid college or no grant college, okay? As an employee, it is their duty to maintain the service book of a teacher. Service book is like a kundali. Okay? Are you getting the point? सर्विस बुक जो हमारी होती है ना टीचर की, वो हमारी कुंडली होती है. उसके अंदर दे आर बाउंड टू मेक एंट्री अबाउट व्हेन यू जॉइंड, आपने किया है, ये कोर्स कर रहा है, उसकी भी आप उसमें नोंद होना चाहिए. आपने जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज की, एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड इन दैट, एंड यू शुड आस्क द कॉपी ऑफ दैट पीरियडिकली. That is your right. So irrespective of the nature of the institution, आप अनम्यूट करो ना. Irrespective of, नहीं आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही. हेलो, हाँ अभी सुनाई देती. So irrespective of the nature of the institution, है ना, the institution must maintain the service book of its teacher, because that is the right of a teacher. It is the record of a teacher in his career. So अगर record नहीं maintain होगा, तो this will cause harm to the interest of the teacher. तो कैसे बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि they are not maintaining? Generally self-financing unit. Generally self-financing unit. हेलो. हाँ राहुल, लिसन. हाँ सर. है ना कि ये हमारी दो अल्टरनेटिव व्यवस्था है. एक है एडेड वन, दूसरा नॉन एडेड. नॉन एडेड है, इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ फाइनेंस. एज फार एज द टीचर इज कंसर्न, डजंट मैटर. इफ ही इज जॉइनिंग एज ए टीचर, हिज राइट्स आर सेम. सर इसमें एक सबसे बड़ा लूपहोल्स आता है कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट है और जो ग्रांटेड यूनिट्स हैं, उस सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट इज मेंटेन टू द मैनेजमेंट. तो कई बार बेसिक सैलरी भी नहीं प्रोवाइड करते हैं जो एज पर रूल बेसिक सैलरी होती है. और सर्विस बुक तो बहुत अलग बात हो गई. सर्विस बुक तो वो मेंटेन भी नहीं रखते हैं. हम लोग के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सब कुछ होता है. तो क्या ये हर एक कॉलेज के लिए नेसेसरी है कि सर्विस बुक बनाया जाए उनका हर एक एज पर यूजीसी एक्ट के हिसाब से? और दूसरा, ये तो आपने बता दिया कि ये हम लोग के राइट्स है. एक एम्प्लॉय एज अ टीचर, ये हमारे राइट्स है कि हमारी सर्विस बुक होना चाहिए. नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी टेल यू, सुनो, अपार्ट फ्रॉम योर राइट, ठीक है, ये सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जो होते हैं, दे आर आल्सो एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी, राइट? एफिलिएशन है कि नहीं? अगर एफिलिएशन नहीं तो डिग्री भी नहीं मिल सकती. एफिलिएशन है. वन ऑफ द कंडीशन ऑफ एफिलिएशन इज दिस, कंप्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो ये जो कमिटी आती है इंस्पेक्शन के लिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कमिटी टू वेरीफाई whether सर्विस बुक्स आर मेंटेन्ड और नॉट. मैं जब भी जाता था जिस भी कॉलेज में, हम तो मानते थे, दिखाओ सर्विस बुक टीचर के, समझे ना? तो इट इज कंडीशन ऑफ एफिलिएशन ऑफ द कॉलेज. जिम्मेदारी है एफिलिएटिंग कमिटी की और यूनिवर्सिटी की टू इंसिस्ट कि द सर्विस बुक्स आर मेंटेन. हमारा राइट जैसा है वैसे उनकी ड्यूटी है. वो ड्यूटी इसलिए है, इट इज ए कंडीशन, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ऑफ एफिलिएशन. हम यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज कैसा बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस इन द पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी रिकमेंड कि हम ये कॉलेज को दे रहे हैं, राइट? University is recommending on the basis of the verification of the record and undertaking. 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग रहती है कि भाई हम सारे नियम का पालन करेंगे करके.
ये वेरीफाई होने के बाद यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट जीआर निकाल के उनको कॉलेज देती, उसके बाद उनको एफिलिएट करना जरूरी है, अदरवाइज उनके प्रोग्राम की कोई वैलिडिटी नहीं इन द मार्केट ना। वो खुद का सर्टिफिकेट देंगे तो उसका क्या वैल्यू है? सर्टिफिकेट की वैल्यू तो यूनिवर्सिटी के नाम से आती है। यूनिवर्सिटी फिर यूनिवर्सिटी के पास में वो जाते हैं कि हमको एफिलिएशन दो, और यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के नॉर्म्स बने हैं, हम उसको बोलते हैं गुणगान तख्ता, ये है क्या, वो है क्या, फलाना है क्या, ढलाना है क्या, नहीं, पानी है कि नहीं, हमका है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, हवा है कि नहीं, ये सब देखते हम, राइट। वो काम है कमेटी का। तो वैसे वो कमेटी को देखना है कि क्या टीचर की सर्विस बुक है, मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे। तो दोनों आपका अधिकार भी है, मतलब टीचर का अधिकार भी है, और वो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी भी, बिकॉज इट इज ए कंडीशन ऑफ एफिलिएशन। कल चल के कोई डिस्प्यूट होता है तो सर्विस बुक ही तो हमारा एविडेंस है। थैंक यू। ओके सर, हेलो। हाँ सर। बोलिए। सर, मेरा नाम सुरेखा जुनगर है, हमारा कॉलेज नॉन एडेड है, तो हाँ। हमारा नैक हुआ है। जैसे नैक होने के बाद में एडेड कॉलेज को जैसे फंड मिलता है कॉन्फ्रेंस सेमिनार और चीज़ों के लिए, वैसे नॉन एडेड कॉलेज को भी मिल सकता है क्या सर, नैक होने के बाद? उनका जैसे अगर कॉन्फ्रेंस अगर हमको लेना है तो उनको ऐसा है कि ग्रांट कौन सी, किससे ग्रांट मांग रहे हैं आप? ग्रैंड नहीं बोल रही हूँ मैं, नैक एक्रेडिट है हमारा कॉलेज। जैसे एडेड कॉलेज को जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जैसे नैक होने के बाद उनको कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो नैक उनको फंड प्रोवाइड करते हैं, तो नॉन एडेड कॉलेज को भी कर नैक सकते से हैं अगर क्या आप अगर फंडिंग, कॉन्फ्रेंस वगैरह? नैक हाँ से अगर फंडिंग की बात कर रहे तो मेरे हिसाब से नैक फंडिंग करना चाहिए, क्योंकि नैक हो चुका है आपका, राइट। हाँ हाँ। अगर नैक हो चुका है लेकिन तो हाँ हाँ नैक में जो पैरामीटर से देखो, एक कॉलेज, एक जी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इसको जो स्टैंडर्ड ले डाउन किए गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, उसकी वो स्टैंडर्ड को कंफर्म करने वाले को ही नैक एक्रेडिटेशन देगा, जी। ठीक है। अगर इसका मतलब है, see everything is taken into account, credibility of that institution also, financial condition, उसके practices, उसकी ability, उसके resources, everything is taken into account. तो इसका मतलब ऐसा है कि in spite of it being a no grant college, this college is worthy of being granted accreditation. क्यों? Because it fulfills the parameters. और कई बार तो ऐसा है कि no grant वाले colleges are better than the government colleges, aided colleges, right? So once that status has been determined, this college is competent enough to discharge the functions of Center of Higher Education, then logically, legally, you become, that institution becomes eligible for getting the grant also. ग्रांट देने की क्रेडिबिलिटी की बात होती है कि नहीं, तो वो क्रेडिबिलिटी नैक से हमको प्राप्त हो जाती है। एंड नैक इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट। नैक कोई प्राइवेट संस्था तो नहीं है, जब मतलब यूजीसी को सर्टिफाई किया गया है कि दिस कॉलेज इज नाउ कॉम्पिटेंट, इट कंफर्म्स टू द स्टैंडर्ड व्हिच आर सेट बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और उस स्टैंडर्ड के अंदर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो इस तरह से एक आधा बैंकर किसी आदमी को पैसे देते समय वो देखेगा ना क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, वैसे ही
ग्रांट देने वाली जो संस्था होती है वो देखेंगे ये इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है कि नहीं तो पैसे देके भाग जाएंगे, प्रोग्राम वगैरह करेंगे नहीं। इसलिए वंस वी आर accredited by NAAC, it means this institution has the necessary credibility and therefore it becomes eligible to receive the grant from the granting agency for conduct of program. बिल्कुल, मतलब डंके की चोट पे आप मांग सकते हैं और वो इसलिए आपको डिनाई नहीं कर सकते कि यू आर नॉट ए ग्रांटेड। नहीं, लेकिन सर ऐसा हुआ है, हमने बोले कि हमारा B+ NAC है, 21 में ही हमारा हो चुका है, लेकिन हमने कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमने अप्रोच किया तो समथिंग उन्होंने नॉन एडेड ऐसे है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको उनको फिर से रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए ऑन दिस लाइन। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। उनको ये लिखना चाहिए कि हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर accredited by NAAC only on the ground that one is a grant in aid, another is a no grant. What has it to do with our status as a grant in aid college or no grant college? We are a center of higher education accredited by NAAC. It means we have established credibility, so we are entitled to. They cannot discriminate. उनको तो सीधा लिखना है आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। As far as release of the grant for conducting academic programs, seminars, workshop, conferences is concerned, no granting agency can discriminate. If it discriminates, it violates Article 14 of the Constitution. अब वहां बैठे हुए भी तो लोग ही है ना विद्वान, उनका जरा कान पकड़ना पड़ता है अपने को, तब तक उनको ज्ञान नहीं आता। जब हम कान पकड़ेंगे तो उनको भी ज्ञान आएगा। जी सर, जी सर। ऐसा रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन ऐसा था कि लाइक सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट से अगर एम्प्लॉय हैं हम, तो हम बोर्ड ऑफ स्टडीज या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अगर जाते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कितना है और कितना ईयर लगता है सर? फॉर डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड, राइट। अगर आपका नॉमिनेशन का मामला है, क्वालिफिकेशंस आर डिफरेंट। अपॉइंटमेंट का मामला है, क्वालिफिकेशंस आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज में नॉमिनेशन करना है तो यू नीड नॉट possess द क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्रोफेसर विच इज क्वाइट ए सीनियर पोस्ट, है ना। लेकिन अगर आपको वाइस चांसलर बनाना है, डीन बनाना है, तो यू नीड टू हैव दैट क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्रोफेसर। So it depends on what post we are thinking about. Every post has got its own qualification. और अगर सर इंक्यूबेशन सेंटर में जाना है, हाँ, लाइक वहां पर तो उसके लिए सर क्या क्वालिफिकेशन, लाइक अभी प्रोफेसर, NSS प्रोफेसर, उसकी जो है एक्चुअली एक्ट में दिए नहीं है क्वालिफिकेशन उसके। उन्होंने कहा है द क्वालिफिकेशन व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द ऑफिशियल गैजेट। तो एक्ट में नहीं है, तो महाराष्ट्र स्टेट ने जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला उसके अनुसार वो हैज टू बी प्रोफेसर। तो वो डायरेक्टर की पोस्ट है ना। तो डायरेक्टर इंक्यूबेशन अगर है, इनोवेशन इंक्यूबेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आई टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यानी सोशली अगर उसको आप देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी। उसका फंक्शन क्या है? अभी तक कैसा था हमारा अप्रोच? यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हम रिसर्च करते थे, वी वर जस्ट बॉदर अबाउट उसका यूटिलिटी क्या है ना। तो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च होता था हमारा। University, or for that matter, any officer of the university was not required to bother what is going to happen with that research. लेकिन अभी फिलॉसफी कैसे है कि your research must have some application. तो ये जो सेंटर होता है इनोवेशन इंक्यूबेशन, तो इंक्यूबेशन में जो हमने रिसर्च कंडक्ट किया है उस रिसर्च को हम प्रैक्टिकली इसमें लाना चाहते हैं।
तो उस कॉन्सेप्ट का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है। जो आदमी वहां पर बैठेगा डायरेक्टर पे, उसमें कौन सी कैपेसिटी चाहिए? He should have the passion for research, and secondly, he should also know what is required in the society and how to push the market in the society, how to convert that innovation into actual production. तो एक अलग दूसरा चेंज भी उसको चाहिए, समझे ना। प्योर रिसर्च करना हमको आ जाता है, बहुत सारे लोगों को भी आता होगा। उसके बाद वाली स्टेप है वो, उसका रोल देखो कहाँ से शुरू होता है, आफ्टर द रिसर्च, कंक्लूजन ऑफ रिसर्च के बाद में उसका रोल शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस आती है, ये नहीं है कि सिर्फ पीएचडी सुपरवाइजर के जैसा है, वो तो उसको मालूम ही चाहिए, बट बियॉन्ड दैट तो ही कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे कि जो जिस जियोग्राफिकल एरिया में हम है, हमारी यूनिवर्सिटी है, उस जियोग्राफिकल एरिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसके बारे में भी हमको मालूम है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है, मिनरल्स क्या है, नेचुरल मैनमेड रिसोर्सेज क्या है, बिकॉज हम तो एब्स्ट्रैक्ट में जाके बेच नहीं सकते किसी भी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट मस्ट हैव ए रिलेवेंस टू द सोसाइटी। तो व्हाट द सोसाइटी रिक्वायर, उस इश्यूज को लेके यूनिवर्सिटी में रिसर्च कंडक्ट करने का, और फिर किया हुआ कंडक्ट को फिर सोसाइटी में लेके जाने का, इतना इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो ये प्रत्यक्ष में होता कि नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम, बट दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ ए डायरेक्टर इनोवेशन इनक्यूबेटर। तो बहुत ही मतलब अगर किसी को वो पैशन अगर है तो उसके लिए ये रोल या ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए वो सीनियर प्रोफेसर को देते हैं। हाँ, एक और था, ये यूनिवर्सिटी एक्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस आए हैं। नहीं, एक्ट के अंदर अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो मैंने बात की थी, दैट कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 पे कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है। 7 पे कमीशन रिकमेंडेशन, जिसमें कि तुम्हारे रिलेशन एक टीचर के प्रिंसिपल के साथ में रिलेशन कैसे होना चाहिए, अपने कलीग के साथ में रिलेशन कैसे होना चाहिए, उसके स्टूडेंट्स के साथ में रिलेशन कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ में रिलेशन कैसे होना चाहिए, और सोसाइटी के साथ। इन अलग अलग हेड के अंदर उन्होंने लिख के रखा कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए टीचर। एक्ट में नहीं लिखे, एंड दैट हैज कम इवन बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और सर जैसे अभी G20 आ रहा है, G20 समिट, हाँ, अपना दिसंबर में G20 समिट आ रहा है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सर वहां पर या यूनिवर्सिटी एक्ट का क्या रोल हो सकता है? G20 में G20 के बारे में मैं तो नहीं बता सकता कि यूनिवर्सिटी एक्ट का क्या रोल है, क्या वो विषय भी चर्चा के लिए रहने वाला है। हाँ जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या वो विषय भी चर्चा के लिए रहने वाला है G20 के समिट। हाँ वो ही, क्योंकि ग्लोबल समिट है सर, एजुकेशन हाईली पूरा का पूरा चेंज हो रहा है और सारी चीजें चेंज हो रही है, तो उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, उस हिसाब से I don't कुछ know हो सकता about, है या नहीं? I don't know about their agenda, right? What things they are going to discuss, I don't know about it. Excuse me, sir. हाँ, मैं डॉक्टर मनीषा पांडे बात कर रही हूँ। हाँ पांडे मैडम बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ग्रांटेड कॉलेज और नॉन ग्रांटेड कॉलेज में जो लेक्चरर लेते हैं उनका क्वालिफिकेशन सेम रहता है, वर्कलोड भी सेम रहता है, लेकिन सैलरी डिफरेंस तो इतना है जैसे कि जमीन आसमान का फर्क है।
सर इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी के नियम चाहिए कि मैनेजमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशराइज करना चाहिए कि कम से कम हमको यानी हमारी जरूरतें तो भी पूरी हो, इतनी तो भी हमको यानी पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सब है लेकिन पेमेंट ही नहीं मिलता सर, बहुत कम। हमें इतना बुरा लगता कि इधर लाखों पेमेंट इधर बढ़ रहा है और हमारा हजारों हजार से भी नहीं बढ़ता। I know it is so pathetic. ठीक है, it is so pathetic. As far as ये जो बात आप बोल रहे हैं कि there are several cases decided by High Court, Supreme Court, कि ये तो हमारा settled principle है ना, equal pay for equal work. So if a teacher has equal qualification, if a teacher is shouldering equal responsibilities, then the payment ought to be equal. और मैंने जैसे कहा कि ये प्राइवेट कॉलेजेस का फंडामेंटल कंडीशन है कि दे आर गोइंग टू कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का सीधा कोई बोलते नियम, सर करना होगा तो करो नहीं तो छोड़ दो करके, ऐसा है। that is precisely this is exploitation of the worst kind of exploitation है, very unfortunate। लेकिन उनको काम करने वाले मिल रहे हैं ना, हाँ समझे ना, अगर आपने छोड़ दिया तो आपसे भी कम पैसे में काम करने वाले मिलेंगे। हाँ, दूसरे मिल जाते हैं, इसलिए तो वो बोलते हैं आपको जाना हो तब जाओ। That is precisely because उनको कोई लेना देना नहीं है टीचिंग विच इज, डोंट टेल अस क्वालिटी, ठीक है। तो सर माझा एक प्रश्न आहे, कॅन आय आस्क? नहीं म्हणजे लेट मी आंसर मैडम क्वेश्चन फाइनली कि वेयर इज द आंसर दे? लॉ तो आपके फेवर में है, देयर इज नो प्रोविजन विच परमिट्स डिस्क्रिमिनेशन, so where is the answer? The answer lies in political movement. So organized movement. क्या टीचर्स ऑर्गेनाइज होने को तैयार है? हम तो कॉलेज से निकाल देंगे हाँ सर। वही तो बात है। और आपको कॉलेज से निकालते ही दूसरे तैयार है ना घुसने के लिए। तो हम तो कुछ this भी is एक्शन नहीं ले precise. सकते ना उनके खिलाफ, कुछ भी नहीं बोल सकते, हम पेमेंट के बारे में तो बोल ही नहीं सकते। See, this is the fight between unequal, हम्म, and individually you cannot fight out. The fight has to be at the organized level only. हम्म, So law is in your favor. The question is, who has that power, who has that resources, who has that willpower? तो सभी लोग अपने अपने देख रहे हैं। हम्म। धार्मिक मैडम, आई थिंक Yes, आई sir. हैव लिटिल टेक्निकल प्रॉब्लम, तो बैटरी डाऊन हो रही है। ओके सर। सर थांबायचं का मग इथे? थांबायचं? काय झालं की 9%च बॅटरी राहिलेली आहे। बरं सर, आपण बघा दुसरं सेशन पण एक घेणार आहे, तर तेव्हा यांच्या काही डाऊट्स असतील ना सर तर आपण कंटिन्यू करूया। करेक्ट, यातले काही क्वेश्चन आपण परत त्या चॉईस वाल्या याच्यात हो घेऊया। हो, त्या सेशन मध्ये आपण कंटिन्यू करू सर। चालेल, ठीक आहे सर, एक फॉर्मल वोट ऑफ थँक्स एक पार्टिसिपेंट करतील, तर मी त्यांना इन्व्हाइट चालेल, करते। हरकत अविनाश सर आहेत का? अविनाश सर, मिस्टर अविनाश उल्हे, आर यू देअर? ऑनलाईन मध्ये कसं आहे, ऑनलाईन मध्ये असते, इनलाईन मध्ये नसते। सर ते एक सांगता नाही येत यामध्ये। आय थिंक त्यांचा आवाज येत नाही। अविनाश सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हॅलो हा सर, हा येतोय आवाज। येस प्लीज कंटिन्यू सर। अविनाश सर, good morning to one and all. Honorable key speaker of this session, respected coordinator of this FIP program, and all dear participants. I am Avinash Ulle, and it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks for this session. Towards Honorable Dr. Shrikant Komawar sir for enlightening us with his outstanding presentation. I am extremely
thankful to respected Priti Dharmik Mein for giving us opportunity to listen eminent personality like Dr. Shrikant Komawar sir. I am express my thanks towards all faculty members of HRDC Nagpur who directly or indirectly supported for this session. Last but not the least, I am extremely thankful towards all the participants for their active participation. Thanks once again to all. Thank you. Okay, थँक यू madam. थँक्यू सर सर नेक्स्ट सेशन आपण प्लॅन करूया मग हो हो ओके सर थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ पे हम रुकते हैं यू कैन प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक वी विल मीट एट 1:30 फॉर अवर नेक्स्ट सेशन या थैंक यू